Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Wednesdays. Technical Wednesdays में आप सभी का स्वागत है and this is yet another episode जहाँ पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं. काइंड ऑफ मिड वीक स्पेशल मार्केट एनालिसिस जहाँ पे हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस को यूज करने वाले हैं. दैट इज टाइम, दैट इज प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम एंड सेंटिमेंट. तो इन सातों चीजों को हमने ऑलरेडी इन डेप्थ लर्न किया है इन आर बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज. तो अगर आपने वो चेकआउट अब तक नहीं की है, मेक श्योर यू चेक इट आउट. द लिंक इज ऑलरेडी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. एंड इन द मीनवाइल वील डू द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ओवरऑल पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है. एंड टुडे इज वेडनेसडे व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एज वेल एज दिस वीडियो इज गेटिंग पोस्टेड. तो ओवरऑल पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे मार्केट में आगे 2 दिन में क्या हो सकता है. एंड जो भी हमने वीकली मास्टरमाइंड में एनालिसिस किया था ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसके हिसाब से हमें क्या देखने को मिला है, क्या हमारा एनालिसिस करेक्ट रहा है, और अगर करेक्ट रहा है तो उसके बेसिस पे हमें अभी क्या करना है. Whether we have to whether we have to wait for the resistances to break out or we have to be a fancy-er. That's what the overall analysis in this video is going to be like, right? So let's quickly have a look at Nifty 50 and Bank Nifty since last 3 days. राइट, सो निफ्टी 50 का अगर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में देखें, द एनालिसिस लाइक द वे ऑफ आर एनालिसिस इज मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, जहां पे मंथली डिपिक्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली डिपिक्स मीडियम टर्म ट्रेंड एंड डेली डिपिक्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड. तो इन तीनों ही चार्ट्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल मेजर इंडाइसेस जो है उसका पर्सपेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से क्या चल रहा है. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी 50. तो मंथली चार्ट इज अबव 60, बट यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है. ऑलमोस्ट आधा महीना कंप्लीट हो चुका है. टुडे इज 16th ऑफ जुलाई. सो अगेन हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. पहला एक हफ्ता हम लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ इज ऑल अबाउट. बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मंथ हो चुका है एंड अगर इसी तरीके से कंटिन्यूड रहा तो प्रॉबली इस महीने में हमें बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी. बट राइट नाउ RSI is above 60, so there is no such sign of worry. Then we have weekly chart which is around 5960 and यहाँ पे जो है almost 25,000 का राउंड फिगर सपोर्ट लेके right now it is turning on the upper side, but again the main problem will be RSI 60 itself. अगर वो breakout कर जाता है तो well and good, but अगर वो resist कर जाता है तो then we'll see further consolidation for next few weeks till the time it is not breaking out. देन वी हैव डेली चार्ट जो कि ऑलरेडी कंसोलिडेशन में है, मूविंग एवरेज के नीचे है. एंड बैंक निफ्टी का जो था दैट वाज टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट व्हिच इज एक्चुअली कंफर्म्ड, बट निफ्टी 50 में जो है इट्स ऑलरेडी इन अ कंसोलिडेशन जोन. सो टिल द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ RSI 60 और इट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन ऑफ RSI 40, तब तक हमें जो है कंसोलिडेशन में एज अ फेंसीटर रहना वुड बी अ बेटर ऑप्शन rather than buying or selling options on a very shorter time frame, 5 minutes, 15 minutes, and then बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस ट्रेडिंग एज वेल. सो इट्स बेटर इफ वी डोंट ट्रेड अंटिल इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट और ब्रेकिंग डाउन. एंड ऑलरेडी वो जो है एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, इंक्लाइनिंग काइंड ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न. सो वहां पे जब तक ब्रेकआउट्स नहीं आते हैं तब तक हमें वेट करना होगा ऑन द लॉन्गर साइड इटसेल्फ एंड ऑन द शॉर्टर साइड एज वेल. राइट, तो उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है. सो इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी, again the best part about bank nifty is that it is at all time high zone and RSI is also above 60, which means long term trend is bullish. and यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो रही है which is very small kind of bearish candle, तो इतनी कुछ sign of concern नहीं है. then we have weekly chart which is also sustaining above 60 itself. So again this is also a very good sign, forming new highs even on the medium term chart. and then we have daily chart which is almost around 58 59. थोड़ी देर पहले तक देखा जाए तो बिफोर मार्केट गेटिंग क्लोज्ड अराउंड 1:30 और 2 o'clock, दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रीन कैंडल इटसेल्फ, जहां पे वो 5960 के आसपास ऑलरेडी आ चुका था. बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्लोजिंग के टाइम में हमें बेरिश साइड मूवमेंट देखने को मिली, जिस वजह से राइट नाउ इट्स फॉर्मिंग एन इंडेसिसिव कैंडल एंड RSI is also again between 40-60 itself. So till the point of time it is not breaking out of 60 and till the point of time it is not breaking out of that previous high, तब तक हमें बैंकिंग सेक्टर में भी एज अ फेंसीटर ही रहना होगा. अदरवाइज इवन इफ वी ट्रेड ऑन द लॉन्गर साइड स्टिल वहां पे हमें काफी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे बिकॉज द रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट, चाहे वो RSI 60 का रेजिस्टेंस हो या फिर प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस हो. एंड that's what the overall thing is all about, and I hope that you are absolutely clear with this overall analysis the way we do since last so many months, the way we are doing since last so many months based on that 7 step
approach, that is प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम एंड सेंटिमेंट. तो अगर आपको भी इस पूरे 7 स्टेप प्रोसेस को अच्छे से जानना है, along with few other topics like moving average, Fibonacci, supports and resistances using trend lines, and few other topics on technical analysis, there's a beautiful series which I have linked below this particular video in the description section. Technical Saturdays में ही हमने किया था, but after that we shifted it and we restructured it in the form of technical Wednesdays so that हम लोग हम लोग वीक के बीच में ही मार्केट का एनालिसिस कर सके, बिकॉज वीक एंड पे तो हम लोग वीकली मास्टरमाइंड करते आ रहे हैं. So that's what the overall intention was all about, and we are getting good response on this series as well. So I hope that you're getting maximum value, and in the same format we'll keep sharing videos with all of you so that you can also get maximum value in terms of technicals as well as with respect to some of the psychological aspects when it comes to trading and investing, right? So I hope that you are absolutely clear with this overall analysis. Make sure जो भी आपके takeaways होंगे, do share below in the comment section. And इसके अलावा अगर आप चाहते हो that we should also do 1 or 2 sectors का analysis in technical Wednesdays itself, we are open to that. But if you are suggesting, if a lot of people will suggest that do that, then only we'll inculcate few sectors, 1 or 2, not beyond that, so that हम लोग एक हाथ 2 सेक्टर्स जो इस हफ्ते में परफॉर्म कर रहे हैं उनको अभी से पकड़ के चलें, rather than doing the analysis in weekly mastermind and then starting fresh from Monday onwards. तो उस वे में भी हम कर सकते हैं, but again it will depend on your feedback. But in the meantime, make sure you go through that particular series so that you can understand about technical analysis right from the basics till the advanced. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.